Hi guys, welcome back to the channel, and I'm your host Dr. Seema Jain, a SEBI registered research analyst and partner with Zerodha Upstocks Files and Asta Trade. I'm founder and chief mentor at stockpro. आज ये मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ और उसमें हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे लग रहे हैं, एक, और दूसरा मेरे रडार पे 3 स्टॉक्स हैं कल के लिए, 3 या 4 स्टॉक्स हैं, उनकी बात करेंगे, राइट? This is just to make your list for tomorrow and a few days, right? So let's start. Let's go to the screen. First and foremost, if you have a look at it, Nifty opened gap up, right? Gap up opening ke baad, Nifty continued to move in the upward direction, right? You can see clearly that Nifty had a clear gap up opening. And after gap up opening, it continued to move up, right? First, it came down and then the bulls had the power to move it up again, right? That's a very, very promising stance of Nifty as of now. Now what we do, we'll just go and see what is happening in the option chain. So this is Nifty's option chain. If you see here, a lot of unwinding happening on a lot of levels. So see here, a very, very prominent thing that I want to show you here. In the money call option unwind ho rahe, right? This is something you must notice. Why is it unwinding in the money call option, right? ये एक बहुत बड़ा indication है that Nifty is ready to move in the upward direction. उसी के साथ आप notice करो, there is a huge put writing, right? So Nifty ने एक बहुत अच्छा base बनाया है अपना 17,200 पे, और उसके बाद there is a huge call unwinding. That's a pretty much an indication that market is planning to go up, right? Again, I'll mark it for you. You can just open up Nifty's option chain on NSE and go through it. Just see here at different levels of in the money. You will see at all the levels there has been unwinding. A very, very serious thing to notice. And according to me, Nifty is definitely planning to go up. So now let's also at the same time look into Bank Nifty. What is happening in Bank Nifty? So just quickly, this is Bank Nifty. And if I notice Bank Nifty, there has been unwinding in Bank Nifty also at different levels. See here, there's huge call unwinding in the money call unwinding, 36,000 call unwinding, massive call unwinding. But the only thing that makes it different, like Nifty और Bank Nifty में क्या थोड़ा सा difference है कि बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा पुट राइटिंग, इतनी प्रोमिनेंट पुट राइटिंग नहीं है, except at the level of 36,500, right? So that is one distinct feature that Bank Nifty has, कि पुट राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाया बैंक निफ्टी में, whereas निफ्टी में पुट राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त बेस बनाया. तो निफ्टी का स्टांस जो है मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी. अब बात करते हैं जो 3 स्टॉक्स मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे हैं. तो फर्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है और जो बाय के लिए मुझे लगता है बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहा है, वो है PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस, राइट? पिरामल एंटरप्राइजेस आपको कहाँ पे बाय करना है? अबव 2225, राइट? इसके जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, मैंने सारे डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, कैसे OI बिल्डअप हो रहा है, प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, all the other data that I see, the volumes, the delivery percentage, everything I've checked, and this looks very promising to me. 2225, and target for this is going to be 2400, right? This place, or rather I would slightly bring it down, my target will be 2379. So 2225 से लेके 2380 तक मेरा target होगा. Good, about 80 plus 80, 160 points, not bad, right? So that's my first stock for you. And the other stock that I have on my radar is Power Grid, right? That's also a buy stock, right? According to me, this is really gearing up to move up, right? तो buy कहाँ पे करेंगे हम? 233 के ऊपर इसको buy करेंगे और हमारा टारगेट कुछ रहेगा 238 का, right? बहुत बड़ा टारगेट नहीं है क्योंकि एक स्मॉल वैल्यू स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा इसमें टारगेट नहीं मिल रहा है. बट अगर 238 को क्रॉस करता है, 240 को क्रॉस करता है, then I'm looking for a target of 250. Right? And mind you, when I'm telling you with respect to the May month, right? You got to buy the May futures if you're buying it. और अगर आपको ऑप्शंस भी खरीदने हैं तो May month के ऑप्शंस खरीदिए, राइट? सो ये 2 स्टॉक तो मेरे रडार पे है जो मैंने बाय किया है. एक स्टॉक मेरे रडार पे है जो कि थोड़ा अंडर स्ट्रेस लग रहा है, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, राइट?
तो अगर मैं इसको देखती हूँ स्टॉक को, तो थोड़ा बुलिश, लाइक टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि थोड़ा बुलिश है, बट जो इसके डिलीवरी परसेंटेजेस हैं और इसके ऑल द अदर डेटा पॉइंट्स हैं वो थोड़े से वीक लग रहे हैं, राइट। अगर हम इसको बाय करेंगे तो वी विल बी बाइंग अबव 6,700, और अगर हमको इसको सेल करना होगा तो हम शॉर्ट करेंगे 6,600 पे, इसको शॉर्ट करेंगे, राइट। और जब हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 6560, और 6550 के नीचे I think this will be under free fall, right? But you have to be careful. You have to be trading very carefully, right? तो दो स्टॉक्स मैंने आपको बाय के दिए। मैंने आपको बताया कि निफ्टी में बहुत जबरदस्त मुझे एक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिख रहा है। That's my first point today's video. Second point is PEL and Power Grid are really looking good for buy side. And the third point is Ultratech Cement is looking very weak to me. अगर अपने हाई को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, then you can only think about buying. Otherwise, it looks very weak to me for the month of May, right? Please don't do it tomorrow, right? I'm not talking about tomorrow. अगर कल निफ्टी पॉजिटिव होगी तो हो सकता है ये भी आपको एक अच्छा मूव दे, बट मैं इसको हायर लेवल पे शॉर्ट करूंगी। वेरस अगर पावर ग्रिड और पीएल की बात करूं, लोअर लेवल पे मैं उनको बाय करूंगी। सो दीज वर माय 3 स्टॉक्स। एंड अगर आपको इसी तरह के स्टॉक्स चाहिए जिनमें ब्रेकआउट आ रहा हो या आपको मार्केट की डायरेक्शन समझनी हो, रिमेन ट्यून्ड विद स्टॉक प्रो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।